हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट तैयारी अच्छी चल रही होगी जेईई एंड नीट की। अगर नहीं भी अच्छी चल रही है तो आज के सेशन में चक्रू एकेडमी आपके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेके आया है, जिस पे मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जहां से मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्विकली रिवाइज हो जाएंगे। पहले ये समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली मोशन इन टू डायमेंशन। इसका मतलब ये हुआ किसी भी पॉइंट पे थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अगर प्रोजेक्टाइल एक्स वाई प्लेन में है तो वेलोसिटी x एज वेल एज y डायरेक्शन में होगी एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगर वेलोसिटी दो डायरेक्शन में है इसका मतलब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट शुड बी आल्सो इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। तो शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इफ यू सी ऑन द स्क्रीन द फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहां पे वी हैव कंबाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन विद कोलिजन. So if you practice this question, your concept of conservation of linear momentum as well as collision and projectile motion, all three gets covered. ठीक है, तो बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन मल्टीपल कॉन्सेप्ट को सम अप करके बनाया गया। तो शुरू करते हैं। So question says that a particle of mass m is projected with a speed u from the ground, angle of projection pi by 3 with x axis. ये बहुत जरूरी है पढ़ना। Sometimes they make it a bit interesting by giving the angle with respect to vertical, and हम लोग assume कर लेते हैं कि हमेशा angle will be with respect to horizontal, which is wrong. So read the question carefully. When it has reached to its maximum height, it collides completely inelastically. What is the meaning of inelastic collision? जैसे ही दो ऑब्जेक्ट inelastic collide करते, perfectly inelastic, both the objects combine together and move together after collision. So perfectly inelastic collision means after the collision they will become a single object, or you can say they will move together with a common velocity. So it collides with another particle, mass same है, और वो particle किस velocity से move कर रहा है? ui. It is moving with a velocity ui. ui means the other particle is moving in the x direction with velocity u. So the horizontal distance covered by the combined mass, horizontal distance covered by the combined mass before reaching the ground is. So let's solve it. So एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है, फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये पार्टिकल यहां से मेरा चला और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, ठीक है। इसको यहां पे एक पार्टिकल और मिला, राइट? इट गॉट वन मोर पार्टिकल हियर व्हिच इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ व्हाट? u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ऑलरेडी मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये पार्टिकल इसको मीट करता है मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है? द वर्टिकल कंपोनेंट of the velocity will be zero at the maximum height, but horizontal will not be zero. Horizontal component of the velocity will be exactly same as the initial velocity in the x direction. अगर मैंने इसको suppose u से launch किया है at an angle of pi by 3, तो what will be this component? u cos pi by 3. And what will be the vertical component? u sin pi by 3. So यहाँ पे इस particle की velocity क्या होगी? u cos pi by 3. तो ये दोनों एक दूसरे से मीट करते हैं, यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे और फिर साथ में निकलेंगे यहाँ से एंड दे विल हिट द ग्राउंड, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे। तो ये कंडीशन है जस्ट बिफोर द कोलिजन। द मोमेंट दे कोलाइड आफ्टर द कोलिजन दे विल मूव टुगेदर। तो वही वेलोसिटी हम निकालेंगे बाय यूजिंग लीनियर, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जहां पे क्या फाइनल वेलोसिटी है जस्ट आफ्टर द कोलिजन मुझे चाहिए। सो लगा लो। सो इनिशियल मोमेंटम विल बी व्हाट? m into u. व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम? पहले इसका मोमेंटम भी लिखो, दूसरे पार्टिकल का, m into u cos pi by 3. So this is the initial momentum of these two particles. क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? They collide perfectly inelastic. So mass will get combined. So what will be the total mass? 2m. I want to find what is the final velocity in x direction. Final means what is the velocity just after the collision. So that is the vx, just after the collision. So let's solve it. So mu plus mu cos pi by 3. What is cos 60? 1 by 2. Equal to 2m into vx. So we can cancel m. So what will be the velocity? If you add it, it will be 3u by 2. So 3u by 2 equal to 2 times of vx. So what is the velocity after the collision in the x direction? Vx will be equal to 3u by 4. ठीक है,
So this can be also a simple question. What is the velocity after the collision? So 3u by 4. Now we need to find out what is the distance covered by the combined mass after the collision. So when they move together, right, they will hit at this point, suppose 2m. So what is the distance covered? This much. This much is the distance covered. After they combine, they move this much in the horizontal direction. So I can say that this is x. So what will be this x equal to? Distance will be equal to what? Speed into time. Because in a generic, or you can say in the by default, in a projectile motion, we assume that there is no acceleration in the x direction. So x will be equal to ut plus half at square. The acceleration in the x direction will be 0. So what will be the displacement? Velocity in the x direction into time. Correct? That's what we need to find. This thing we need to calculate. So in this Vx we already calculated. We need to find the time. So कितना time है? Time taken to come from this maximum height to the ground. मुझे यही time तो find करना है, right? यहाँ से यहाँ आने में कितना time लगा? Let's find out that. So what is the height given? If you see, is the height given to us? If it is not given also, we can basically take it as h, which is basically h max. So h max. So we will use what? We will use what here? H equal to, this is the distance, okay, vertical distance, and we need to find the time. So I will use second equation of motion. I will use second equation of motion. In which direction? Y direction. In Y direction. So what is the velocity in the Y direction at this point? See, there is no velocity in Y direction at this point. There is no velocity in Y direction at this point. So uyt plus half ayt square. So let's substitute. So h max, or you can write this as h also. This will be 0. This will be half g t square. So I'm taking this as h. So it will be 2h by g ka under root, which will be equal to time taken. Okay, so this is the time taken by the object to move from this point to the ground. So now we have time also. We have Vx also. Let's substitute it. I'll clear some space. I hope that all of you have noted everything. I will erase this part, velocity wala part. So Vx is 3u by 4. So x will be equal to 3u by 4 into time, which is square root of 2h by g. Okay. Now you see all the options. There is not a single option which is in terms of h. H is not there. H is the maximum height. They are colliding at maximum height. There is no expression given in terms of h. So what we will do, we'll calculate h. We'll calculate h and substitute here. Problem here, we can calculate, right? So let's calculate. So if you remember, what is the formula for the maximum height? For the maximum height, the formula for the projectile motion is u square sine square theta by 2g. Okay? U square sine square theta by 2g. So h is my h max. What I will do now, I will find out, rather than finding h max, I will find everything which is inside the square root, which is 2h by g. So 2h by g, cross multiply. So 2h. So I took this 2 here. Now I will divide by h. Not h, sorry, g. So I divided this by g. So I will divide here also. So this becomes u square sine square theta by g square. Any problem? I'm explaining again. I wrote the formula for h max. I took this 2 here because I want 2h by g. So 2h by g. So divided by g here, divided by g here. Now, when you substitute in the square root, let's substitute 3u by 4. When you take the square root of this, what will you get? U sine theta by g. U sine theta by g. And what is theta here? Pi by 3. So what is sine pi by 3? Root 3 by 2. So root 3 by 2g. So if you see which option is matching, 3 root 3 u square by 8g. 3 root 3 u square by 8g. Which option? All of you see which option? 3 root 3 u square by 8g, option A. See the beauty of this question. In this question, we use the formula for maximum height also. We use the formula for finding time, which is second equation of motion.
we use conservation of linear momentum. Correct? So multiple concepts are used in one question. So this is, you can say, one of the best question at your JEE mains level or NEET level or BITSAT level. So practice these kind of questions where multiple questions, so not multiple questions, you can say multiple concepts are involved. So practice those type of question where multiple concepts are involved. Okay. So let's move to the next problem. Okay, students, if you read the question, here what is given? The position is given, right? The position of a projectile launched from the origin, the time t equal to 0 is given by. So the position of the particle at any time t, which is 2 seconds here, is given. Position is given. This is not velocity, position. You need to find out at what angle it is projected. So basically find the angle of projection. Let's draw the figure quickly for this. So let's draw the figure. See, figure is not must. We are just drawing for our reference. Okay. So the projectile motion, it is projected at a velocity u at an angle theta. So this component will be u cos theta. This component will be u sin theta, right? This is basically uy. So they are telling that at any particular time, position is given. Okay. So how do you write the position in x direction? So in x direction, since the acceleration is 0, you can directly say displacement will be ut. So ux into t, which is u cos theta into t. What is the time given? 2 seconds. And what is the position in x direction? 40. So 40 will be equal to u cos theta. 40 will be equal to u cos theta into 2. So what will be u cos theta from here? U cos theta will be equal to 20. Now similarly, what is the y coordinate? 50. So how do you write y coordinate? Acceleration is not 0 in the y coordinate. So y will be equal to ut plus half at square. So y will be equal to uyt plus half ayt square. So what is the y coordinate? 50. So what is the initial velocity in y direction? U sine theta. And what is the time, students? 2. So 2. Now what is the acceleration? Since acceleration is in the downward direction, तो downward को हम लोग negative ले लेते हैं. ठीक है, negative. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Minus g. Acceleration will in the y direction will be minus g. So you'll write 1 by 2 into minus g t square. So 2 u sine theta minus 5, 10 by 2 5 and t square कितना हो गया? 4. 4 5 is 20. तो यहाँ पे आ गया हमारा 20. इसको इधर मूव कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 70 by 2 35. So u sin theta will be 35. तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन. मुझे tan थीटा चाहिए, बेसिकली एंगल चाहिए. पहले हम tan थीटा निकाल लेते हैं. लेट्स डिवाइड दिस वन एंड दिस वन. दोनों को डिवाइड करो फटाफट. तो u गेट्स कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा. So tan theta is how much? 35 by 20. So 5 sevens are 35, 5 fours are 20. So theta हमारा हो गया tan inverse of 7 by 4. कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? दैट इज ऑप्शन सी. ठीक है. देखो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे यू कैन सी दैट आई एम नॉट यूजिंग एनी स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया. यूज क्या किया है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में दोनों जगह पे अप्लाई करो. दैट्स व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, और कुछ नहीं है. फॉर्मूला तो कोई भी याद कर सकता है यार, कोई भी याद कर सकता है, बट कैसे कॉन्सेप्ट को समझना है, अप्लाई करना है विदाउट यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो ये क्वेश्चन सिखा रहा है. तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखना ही भूल गया. कोई बात नहीं, मुझे क्वेश्चन याद है, तो आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन. इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, तो क्वेश्चन मुझे याद है, मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ में कॉपी कर लो. सो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारे पास. ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट एक वॉल या यू कैन से बिल्डिंग या इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्टाइल है. पहले प्रोजेक्टाइल ड्रॉ कर लो. यहाँ पे एक बिल्डिंग है. ठीक है, जिसको ये प्रोजेक्टाइल क्रॉस कर रहा है. ठीक है, किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया मैंने?
45 डिग्री पे, ठीक है। तो यू कैन से दैट दिस इज अ वॉल, ठीक है, ये वॉल है, ये क्या है, वॉल है। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल है, इसको प्रोजेक्ट किया हमने एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, और वेलोसिटी ले लो u, ठीक है। सो दे आर टेलिंग कि वॉल की लेफ्ट साइड का डिस्टेंस 4 मीटर है, और वॉल के राइट साइड का डिस्टेंस ऑन द राइट साइड ऑफ द वॉल टिल इट हिट्स द ग्राउंड, दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर, ठीक है। दिस मच कॉन्सेप्ट, दिस मच डेटा इज गिवन टू अस कि एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टेड 45 डिग्री, इट क्रॉसेस अ वॉल, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द वॉल इज 4, वॉल के बाद टिल द पॉइंट इट हिट्स द ग्राउंड इज 6। इतना डेटा हमारे पास है, ठीक है। उन्होंने पूछा क्या है कि आप मुझे ये बताओ कि इस वॉल और बिल्डिंग की हाइट क्या है, ठीक है। आप ये बताइए वॉल या बिल्डिंग की हाइट क्या है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें, सिंपल है, फटाफट सॉल्व कर लो। सो इनडायरेक्टली देखो उन्होंने हमें रेंज दे दिया है, ठीक है। तो रेंज है कितना, 4 + 6 10। रेंज का फॉर्मूला पता है, लगा दो फटाफट फॉर्मूला। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, करेक्ट। सो यहां से यू विल गेट यू स्क्वायर, सो यू स्क्वायर विल बी हाउ मच, 10 × 10 100, साइन 45, 45 नहीं है 2 थीटा है। ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है बट कॉमन मिस्टेक है, हम देखते नहीं है 2 थीटा है। सो थीटा इज 45 डिग्री, सो 2 थीटा 90, साइन 90 विल बी 1। सो यू स्क्वायर कितना हो गया 100, तो यू कितना हो गया बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने निकाल लिया वेलोसिटी विथ विच इट इज प्रोजेक्टेड इज 10। अब मुझे निकालना है कि भैया हाइट कितनी है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, और मुझे निकालना क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम टाइम निकाल लेते हैं कि कितने टाइम के बाद ये यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। सो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने किया, that x is equal to what, velocity in x direction into time, so what will be the velocity in x direction, u cos 45, so u cos 45 into t, ठीक है। so x है 4, velocity है 10, so 10 cos 45 into t, so t will be equal to 4 by 10 cos 45। सॉल्व कर लेंगे इसको आराम से बाद में। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच टू द टॉप ऑफ द वॉल, ठीक। मुझे चाहिए y कोऑर्डिनेट, तो आई विल अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन, लगा दो फटाफट। सो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है, ए वाई टी स्क्वायर। सो व्हाट इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, u sin थीटा, सो u sin 45 into t, ay will be what, minus g, so minus half g into t स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है, तो u साइन 45 कितना हो जाएगा, u इज 10, सो 10 साइन 45 इंटू टी विल बी सेम एज 10 कॉस 45 इंटू टी, वो हमारे पास पहले से ही है। सो 10 cos 45 into t is 4, डाल दो यहाँ पे 4, so y will be equal to 4 minus 10 by 2 5, so what is t square, t square, स्क्वायर कर दो इसको, so 4 4 जा 16, 100, ठीक है। और cos 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos 45 is basically 1/√2, तो 1/2, 2 will go up, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो फटाफट, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 5 जा 80, 80 into 2 160, 160 by 100 will be how much बच्चों, 1.6, so 4 minus 1.6 which is 2.4 meters। इसका मतलब ये हुआ कि भैया the height of this building is 2.4। फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, रेंज का फॉर्मूला यूज किया, परफेक्टली करेक्ट, बट यहाँ पे इफ यू सी केयरफुली वी आर यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो कितने भी फॉर्मूला याद कर लो, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद लाइक एप्लीकेशन ऑफ यू कैन से इक्वेशंस ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, कहीं ना कहीं जाके अच्छे क्वेश्चन में फंस जाओगे। सो फोकस ऑन बोथ द थिंग्स, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, होमवर्क दूंगा वो क्वेश्चन, आई विल गिव द हिंट बट यू हैव टू ट्राई दैट एंड राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स।
So देखो बच्चों, what is written here? A ball is thrown from a point with a speed of v naught at an angle theta. ठीक है? From the same point and at the same instant, a person starts running in the horizontal direction. एक बंदा भाग रहा है, ठीक है? और उसी टाइम पे हमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन भी स्टार्ट किया at the same angle theta. Now the person is running with a speed v naught by 2 to catch the ball. ठीक है? एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके पास वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगी एज वेल एज वर्टिकल. सो पर्सन इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू कैच द बॉल. So what you have to think to catch the ball, the horizontal component of the projectile motion should match with the velocity of the person. यहां पे velocity in the vertical direction के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे क्या करना होगा, जो horizontal component है velocity की for the projectile motion, that should match with the person who is moving in the horizontal direction. So these kind of question you can solve on fingertips. So I've given you the hint. So when you take the component, right, make sure that when you write v naught cos theta, that will be the horizontal component, that v naught cos theta should be matching with v naught by 2. So the moment they are equal, at which angle you need to find out. Okay, so if you see here, answer will be yes. Answer is yes. Solve karna. It will take 5-10 seconds and do write down your answer in the comment box. Okay, so I will come up with a new video on Newton's law of motion, jahan pe I will take few questions where they ask you to find the acceleration, tension, or where they include friction. So basically mostly on the free body diagram I will take few questions. So अच्छे से तैयारी करो. Chakru Academy is with you all. Make sure that you are giving your best. That's what is important. So see you guys in the next session.